We are in Noida. तो आज हम नोएडा में हैं. We had a Snana Yatra festival yesterday here in Noida. कल यहाँ नोएडा में हमने स्नान यात्रा उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया. The Snana Yatra, official Snana Yatra festival is taking place today in Jagannatha Puri Dham. Okay. जाए तो वास्तविक स्नान यात्रा उत्सव जो है आज जगन्नाथपुरी धाम में मनाया जाएगा. जगन्नाथपुरी धाम की जय. Yeah, they must be getting ready for Snana Yatra Maha bathing Abhishek of Jagannath, Baldev, Subhadra today. आज वे सभी mute Hari Kirtan, not hearing it. कॉल बंद कैसे कर सकते हैं? कॉल आना. Yes, okay now. I think so. There was a call. Yeah, it's okay, Maharaj. Maharaj, it's okay. Hello. So, today, as I said, today's a Snana Yatra of Jagannath, and leading later on in about 2 weeks' time will be Ratha Yatra festival. The series of yatras or festivities, and today is beginning of one such series of festivities in Jagannath Puri. Today is Snana Yatra of Lord Jagannath. आज से जैसा बताया था हमने कि स्नान यात्रा जगन्नाथ भगवान की प्रारंभ हो रही है और 2 हफ्ते के उपरांत भगवान जगन्नाथ की सुंदर दिव्य रथ यात्रा भी होगी. और अब से जो है एक क्रम शुरू हो रहा है जगन्नाथपुरी में उत्सवों का. तो ये आज का जो उत्सव है ये उसकी शुरुआत ही मात्र है. Hari Hari. So, why is Snana Yatra done on this day in Jagannath Puri? The reason being, today is the day that the Krishna appeared, manifested as Jagannath. So, कारण आज क्या है कि स्नान यात्रा आज के दिन क्यों मनाई जाती है? उसका मुख्य कारण ये है कि भगवान कृष्ण स्वयं आज ही के दिन जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए. Well, could only or should only expect that you to know that pastime, which it is said it took place in Kurukshetra when while the Brajavasis from Vrindavan and Dwarkavasis from Dwarka had assembled, and Hari Hari at one point Rohini was addressing the residents of Dwarka about the state of affairs of devotees of Vrindavan, especially how they had been missing Krishna or feeling intense separation from the Lord. She was narrating all this to the residents of Dwarka. तो एक समय में जैसा कि अब मैं आशा करता हूँ आप सबको पता ही होगा कि किस प्रकार से जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जब ब्रजवासी और द्वारिकावासी दोनों ही एकत्रित हुए थे और उस समय द्वारिकावासी को रोहिणी मैया जो है वो ब्रजवासियों के उस भावना का या उस दशा का अनुभव करा रही थी या उसके विषय में बता रही थी
जो वो भगवान कृष्ण के विप्रलम्ब में या उनके सेपरेशन में जो अनुभव करते थे भगवान के जाने के उपरांत, जैसी उनकी दशा हुई, जैसे उनके भाव हुए, उसका वर्णन रोहिणी देवी ब्रजवासियों की तरफ से द्वारिका वासियों को कर रही थी। Rohini, of course, the mother of Balaram, Rohini, she was sharing her personal experience and realization on this day, today, to Dwarkavasis in Kurukshetra. And as she was about to begin narration, I'm getting into the details, which I did not want to do, but Hari, I wanted to say something else. Anyway, let's see how it works. So but Rohini did not want Krishna and Balaram to hear this narration or what she had to say. So she had asked, in fact, Subhadra to be at the entrance or the gate. And in case Krishna and Balaram they come in the direction where the Rohini was doing her address. Then Subhadra was asked not to allow them to come in. Yeah. इस प्रकार से रोहिणी जी जो बलराम जी की माता हैं, तो वो अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत अनुभव इस प्रकार से जब आदान प्रदान कर रही थी ब्रजवासियों की ओर से द्वारिका वासीस को, तो इस कथा के बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने सुभद्रा जी को ये सेवा दी थी कि आप द्वार पे खड़े होकर के इस बात का ध्यान रखना कि कृष्ण और बलराम जो हैं इस वार्ता को, ये जो मैं वर्णन कर रही हूँ, उसको ना सुने और उनको अंदर आने से रोका जाए। Rohini was thinking that Krishna and Balaram, they will not be able to handle her talk, or they'll be too much influenced by what she had to say. They will not be able to tolerate this, and they could be disturbed hearing the suffering of Brajavasis, transcendental suffering, missing Krishna. And see, if Krishna and Balaram would hear, then this will be too much for them to hear and understand this. So that's why she was trying to avoid Krishna and Balaram hearing her talk. तो रोहिणी माता इस प्रकार से सोच रही थी कि कृष्ण बलराम यदि उनकी वार्ता को सुनेंगे, जिसमें कि वो बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक जो विप्रलंब के भाव का वर्णन कर रही थी, तो वो यही सोच रही थी यदि कृष्ण बलराम इस वार्ता को सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही ज्यादा इस बात को सुनकर दुखी हो जाएंगे और बहुत ही अचंभित भी होंगे और बहुत दुखी भी हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण बलराम उसकी उन वार्ताओं को सुने। Anyway, so Rohini's talk address began, and Subhadra was at the entrance. And for sure, Krishna and Balaram did come her way or in the direction of this entrance. And Subhadra did try to stop them, but they overpowered her. And they said, okay, I will not go inside, but we could be here at the entrance. And so that is where they stood, and they heard what Rohini had to say about the residents of Vrindavan. And when they heard, now Krishna is hearing, Balaram is hearing, and Subhadra is also hearing. And when they all three of them have heard Rohini's narration, then as Rohini had expected or predicted, this was a little too much for them to handle, digest, and they were there was agitation,
in their heart and the mind, and as a result, their external or externally they were changing their forms, and the whole transformation took place in their personality, in their form, and that transformation is Jagannath, Krishna becoming Jagannath, and Balaram becoming Balaram with Jagannath and Subhadra. So this form they assumed as they heard Rohini speak about devotees in Vrindavan, and that transformation, as I said earlier, happened today. So Krishna becoming Jagannath, assuming this form of Jagannath, we could of course say this is a Leela of Krishna of appearing as Jagannath took place today, and hence the Snana Yatra takes place on this day. Yeah. तो जब रोहिणी जी ने इस प्रकार से अपना संबोधन प्रारंभ किया और सुभद्रा जी को उस द्वार पे खड़ा कर दिया, तो कृष्ण बलराम अनायास वहां पहुंच गए। और जब उन्हें सुभद्रा देवी ने बताया कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या आपके लिए यहाँ पर जो है किसी प्रकार की आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने, उनकी छोटी थी तो उनकी बात को ओवर रूल कर दिया, उनकी बात को अनसुना कर दिया। ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, परंतु हमें यहाँ खड़े होकर के तो वार्ता को सुनने दीजिए। तो और फिर वो वहां खड़े होकर के वार्ता को सुनने लगे। और जैसा रोहिणी माता ने सोचा था कि भगवान ने जब वहां खड़े होकर के जब ब्रजवासियों के अपने प्रति प्रेम का उद्गार सुना और उनके हृदय में एक बहुत विशेष प्रकार का कष्ट अनुभव करने लगे, और जो एक विप्रलंब का वो भी अनुभव करने लगे ब्रजवासियों के प्रति और ब्रजवासियों की दशा को सुन करके, और फिर जो उनके रूप में या उनका जो बाह्य रूप था उसमें एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होने लगा, और उनका जो रूप आज हम देखते हैं, भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी बन गए, और बलराम जी, बलदेव जी स्वयं, और सुभद्रा देवी, उन तीनों का ही एक बहुत ही विशेष प्रकार का रूप प्रकट हुआ वहां पर, जो कि उन्होंने ब्रजवासियों का अपने प्रति प्रेम सुन करके, उनका जो विप्रलंब, जो उनकी दशा उनके विरह में हुई थी, उसको जब सुना तो उनकी वो दशा हुई। तो वो सब आज ही के दिन हुआ था, इसलिए स्नान यात्रा आज ही के दिन मनाई जाती है, और ये हमें उस जो हुआ था, जो ये घटना घटी थी कुरुक्षेत्र में, उसका स्मरण भी कराती है। Yeah, so this was just one ghatana, one episode, one pastime that we just briefly narrated to you, and that happened today, and I can't say, but lasted for a while, and again Jagannath was back to normal, and all those three personalities, they assumed their normal, regular forms. However, the form that Krishna and Balaram Subhadra had assumed as they were hearing Rohini, they have become immortalized. They have also become like a eternal forms, as it is said that each Leela of the Lord is eternal. So this was one Leela that took place on this day of Jagannath, Krishna becoming Jagannath. So this also has become eternal, and it is eternally, Jagannath is
Krishna is worshipped in the form of Jagannath in Jagannath Puri, and now by the arrangement of Srila Prabhupada's Hare Krishna movement, this Jagannath form, Jagannath deity, is remembered and worshipped all over the world. Yeah. तो ये एक विशेष प्रकार का जो उत्सव हुआ, एक प्रकार का जो एपिसोड घटना घटी, वो एक बहुत बड़ा पास टाइम भगवान की लीला थी, जिसको कि संक्षिप्त में यहाँ बताया गया। लेकिन आज ही के दिन वो घटना हुई थी, और किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो थे, उस जो अपना रूप था उन्होंने ग्रहण किया जगन्नाथ जी के रूप में, कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी ने, और पुनः वे थोड़ी समय के उपरांत अपने वास्तविक स्वरूप में कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी के आ गए। लेकिन वो जो भगवान का रूप जो प्रकट हुआ था ब्रजवासियों का विप्रलम्ब सुनकर या उनकी दशा को सुनकर, वो जो रूप था वो शाश्वत रूप से स्थापित हो गया। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान की प्रत्येक लीला शाश्वत होती है और आध्यात्मिक होती है, पूर्ण रूप से दिव्य होती है। तो ये लीला भी भगवान की दिव्यतम और पूरी तरह से शाश्वत हो गई, और आज भी इस लीला का यशगान और गुणगान पूरे संसार में किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज भगवान जगन्नाथ पूरे संसार में पहुंचे हैं, और उनकी ये लीला भी पूरे संसार में भक्तों के द्वारा गाई जा रही है। In fact, we all are devotees of Jagannath, worshippers of Jagannath, because Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he worshipped Jagannath, Baldev, Subhadra, but he preferred to perform his final pastimes in Jagannath Puri, and Jagannath was worshipable deity of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. इस प्रकार से हम सभी भक्त आज जगन्नाथ भगवान का पूरे संसार में जो है स्मरण कर रहे हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उपासना की, और उन्होंने ये चाहा, उन्होंने इसको अपने जीवन में मतलब प्रेफर किया कि वो किस प्रकार से अपने जीवन के जो आखिरी जो लीलाएं हैं, ये पास टाइम्स हैं, वो जगन्नाथपुरी में ही मनाएं, और जगन्नाथ भगवान उनके प्रकट जो है वो साक्षात जो वर्शिपेबल या पूर्ण जिसे कहना चाहिए कि उनके आराध्य विग्रह थे, जिनकी वो आराधना किया करते थे जगन्नाथपुरी में रहकर। So when we take darshan, whole world of course takes darshan, but and then Gaudiya Vaishnavas take darshan. Chaitanya Mahaprabhu took darshan. So what do they see when we see Jagannath? We take darshan of Jagannath. What are we seeing? What are we understanding when we take darshan of Jagannath? What that darshan is reminding us of when we take darshan of Jagannath, Baldev Subhadra. तो जब हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, या पूरा संसार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करता है, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, क्या हम समझते हैं जब हम भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य दर्शन को करते हैं? पूरा संसार तो नहीं समझता. This is the trouble. Whole world is also taking darshan, but Jagannath is giving the darshan, the true darshan, to Gaudiya Vaishnavas, as we understand Jagannath through the eyes of the vision of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
तो वास्तव में पूरा संसार तो जगन्नाथ का दर्शन उस रूप में नहीं कर पाता है, लेकिन हम लोग सौभाग्य से गौड़ीय वैष्णव जो हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम वास्तव में समझ पाते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ क्या हैं और उनके उस रूप के पीछे का रहस्य क्या है। और इस प्रकार से हम लोग वास्तविक दर्शन जो गौड़ीय वैष्णव है वही कर पाते हैं भगवान जगन्नाथ का। So to understand Jagannath, as we take darshan of Jagannath, what are we understanding? What kind of darshan Lord Jagannath is giving to us? What are the reminders he's giving to us is Lord Jagannath's love for his devotees. He loves his devotees so much. And that's what we other day also were talking. But Lord said, and that was, he was saying that to Durvasa Muni, that sadhavo hridayam mayam, sadhunam hridayam tvaham, mad anyatena na jananti, naham tebhya managapi. That my devotees are my heart. Devotees are in my heart, devotees are my heart. And likewise, they're also in my heart, or I am in their heart, and I am their heart. These are the expressions of feelings of Lord, which are exhibited in, displayed, manifested in the form of Jagannath, or as we take darshan. This is what we understand. What is on the mind of this Lord Jagannath? Who is he thinking of? Yeah. तो भगवान जगन्नाथ का जब हम दर्शन करते हैं तो हम भगवान के किस रूप को वास्तव में देखते हैं, तो हम भगवान के उस रूप को देखते हैं जिसमें कि भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितना अगाध प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। और पिछले दिन जब हमने दुर्वासा मुनि के विषय में सुना था कि जब वो भगवान के पास पहुंचे थे तो भगवान ने कहा था उनसे, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो अहम मद अन्यत्य न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। तो मेरे भक्त ही मेरा प्राण है, मेरे हृदय हैं, और मैं अपने भक्तों का हृदय हूँ, मैं उनका प्राण हूँ। मेरे अतिरिक्त वो अन्य किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तो ये वास्तव में उद्गार है भगवान के अपने भक्तों के संबंध में। तो जब हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो हमको इसी जो भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रेम है, जो उनका बहुत ही गाढ़ उनके साथ संबंध है, उसका स्मरण करना चाहिए जब हम भगवान के इस दिव्य रूप को देखते हैं। Yeah, so we say, I love the Lord. We all love the Lord. But as we take darshan, what Lord is, जो भगवान दर्शाते हैं, Lord is showing us or expressing us, communicating with the drashta, the seer, one who is taking darshan, that I love my devotees. I love them. I love my devotees. So this is a two-way traffic, this love, the exchange. So it is not just we, the living entities, the devotees, we love the Lord and Lord doesn't care for us. No. So in this form of Jagannath, Lord is making it very, very clear
and letting the whole world know, or those who take his darshan know that I love you, my devotee, my dear devotee. So this is darshan that we should be getting, we are getting when we see Jagannath. I love you, I love you. Yeah. तो जब हम इस प्रकार से कहते हैं कि मैं भगवान आपसे प्रेम करता हूँ, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, और जब हम इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं, तब भगवान भी अपने इस रूप से क्या हमको दर्शाना चाहते हैं या क्या हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो भगवान भी वास्तव में अपने भक्त से कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं आप ही मुझसे प्रेम करते, वास्तव में मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो एक प्रकार से ये दो तरह का जो ट्रैफिक होता है, जैसे यातायात दो तरफ का होता है, वैसे ही ये है। तो भगवान से भक्त कहते हैं, जब उनका दर्शन करते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है, जो उनका फॉर्म है, ये एक प्रकार से भक्तों से भी बड़े जोर से कहता है आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो एक प्रकार से ये भक्त और भगवान के बीच का बहुत पारस्परिक और प्रेम पूर्ण आदान प्रदान है। Yeah, also when we take darshan of Jagannath, I mean, his feet, they have entered his trunk, his main body, but the hands are, at least half of the hands are still sticking out when we see from the elbow onwards, they are out and the rest is in. So when we take darshan, this is, why is that? He's extending his hand forward. So again, yeah, some devotees, this is their realization that Lord is trying to pick up his devotee, like a mother tries to pick up the child and lift the child and maybe kiss the child or embrace the child and love the child by picking him up or picking her up. So Jagannath, as we take darshan, and he has hands at least partially out, manifested, and he's extending his hand, helping hand to the living entity, to us, to pick us up and love us, accept us, embrace us. तो जब हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान के जो चरण हैं, भगवान के जो पैर हैं, एक प्रकार से पूरी तरह से उनके शरीर के अंदर धस गए हैं या चले गए हैं। परंतु जब हम हाथ देखते हैं भगवान के, तो भगवान के जो हस्त हैं वो एक प्रकार से कोनी ही तक ही शरीर के अंदर गए हैं, और उसके आगे का जो भाग है वो अभी भी हमें दिखता है। तो ये हाथ जो है भगवान के, वो इसलिए जो आचार्य जन बताते हैं, भक्त बताते हैं कि हाथ इसलिए बाहर हैं ताकि भगवान अपने भक्तों को उठा सके, उनका आलिंगन कर सके। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा करके उसका चुम्बन लेती है, उसका आलिंगन करती है, उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। इसी प्रकार से भगवान भी जो अपने दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, उनको बताना चाहते हैं मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें उठाऊंगा इस भव सागर से। तो इस प्रकार से भगवान अपने इस दर्शन के माध्यम से भक्तों को बहुत ही आनंद देते हैं और उनको अपने समीप लाते हैं अपने दोनों वरद हस्तों के द्वारा। So those who are those Gaudiya Vaishnavas who chant, of course Gaudiya Vaishnavas chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By chanting and chanting this Hare Krishna Maha Mantra, this revives our love for the Lord, and resulting in
Now, understanding Jagannath, or understanding the form of Jagannath, or understanding the heart of Jagannath, or understanding what is on the mind of Jagannath, and having that two-way traffic or reciprocation with Jagannath. This is the result of chanting and hearing about Jagannath, of chanting Hare Krishna, results in this understanding, this realization that we are talking about. तो जो गौड़ीय वैष्णव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो अपनी इस चेतना को पुनः स्थापित करते हैं कि इस प्रकार से भगवान उनसे प्रेम करते हैं, और वे इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान का जो ये विग्रह है वो वास्तव में किस प्रकार से भगवान अपने हृदय से भक्तों से प्रेम करते हैं। वे समझ जाते हैं किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और वे समझ जाते हैं कि भगवान ने अपना किस प्रकार से वरद हस्त उनकी ओर बढ़ाया गया है। तो ये वे तभी समझ पाते हैं जब वे ध्यान पूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं। Prema Pamartho Mahan, attaining love of Godhead, is the goal of human form of life, and that is achieved by the chanting of Hare Krishna and by taking darshan of Jagannath, or serving Jagannath, or performing the Snana Yatra for Jagannath, or performing Ratha Yatra of Jagannath, like that. So by chanting Hare Krishna, and worshipping Jagannath, we achieve love of Jagannath, love of Krishna, love of Godhead. तो जैसे कहा जाता है प्रेम पुमार्थो महान, तो हमें भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वो तभी संभव है जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनकी स्नान यात्रा उत्सव इत्यादि का हम आयोजन करते हैं, और उनकी रथ यात्रा में हम भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रति अपने शुद्ध प्रेम है हृदय में उसका विकास करते हैं, और हमको भगवान से प्रेम हो जाता है। So you may be taking part in Snana Yatra, wherever you are stationed. Maybe some of you, I don't know, you're in Jagannatha Puri, or some other devotees, ISKCON devotees, must have reached Jagannatha Puri also to participate in Snana Yatra. So wherever, whether in Jagannatha Puri or in your ISKCON temples, or at your home, if you have Jagannath, that many of you have Jagannath deities, so you could take part in or perform Snana Yatra of Jagannath today, or hear the pastimes of the Jagannath Snana Yatra. तो आज आप किसी भी स्थान में हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, तो इस प्रकार से आप स्नान यात्रा में भाग ले सकते हैं। जगन्नाथपुरी में यदि आप हैं, कई भक्त आज के दिन जगन्नाथपुरी में होंगे निश्चित ही, और कई भक्त ISKCON के मंदिरों में जहाँ भी जगन्नाथ भगवान का विग्रह है वहां आप स्नान यात्रा करा सकते हैं, कर सकते हैं। अन्यथा अपने घरों में जिनके भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह हैं, वो अपने घर में भगवान की स्नान यात्रा का आयोजन कर सकते हैं और भगवान के विषय में कथा सुन सकते हैं। Okay, then we had, I don't know how high we had gone, but I see 609, I read 615 participants today. I had forgotten to announce that in the beginning. 627
Hardik Patel keeps track, and he is reporting 627 participants today. तो आज हमारे साथ में जो भक्त जप कर रहे हैं उनकी संख्या 627 के करीब है, जो मैं पहले बताना भूल गया था। अभी हार्दिक पटेल प्रभु ने बताया 627 भक्त पूरे संसार से जप कर रहे हैं आज हमारे साथ। Congratulations. आप सबको बधाई है। Wish you happy Snana Yatra, Jagannatha Puri Yatra festival today. आप सभी को स्नान यात्रा का ये दिव्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। आप सब इसको मनाइए। Every yatra, Snan Yatra, Ratha Yatra, it is incomplete without Hare Krishna, without chanting. We do not put one step forward. So chanting is always there. Chanting accompanies all other activities, services we render. तो हम स्नान यात्रा मनाएं अथवा जगन्नाथ रथ यात्रा मनाएं, लेकिन हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप ने इसके साथ में होना ही चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें सदैव ही करते रहना चाहिए, तभी हम वास्तव में इस जो यात्राएं हैं, जो उत्सव हैं, इनका सही अर्थ हम समझ पाएंगे। जगन्नाथ यात्रा स्नान यात्रा महोत्सव की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।